Don't practice empathy at the expense of your own self-respect and your own well-being. Because, as I said earlier, if you are practicing empathy at the expense of your own well-being, it will become self-destructive. आप सब फरमाइश करते हैं कि मैं उर्दू में भी वीडियोस बनाऊं, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। Have you realized that how with time we humans are becoming bitter instead of becoming better? And there is a huge reason behind it. Many of us tend to fail to identify the toxicity in our surroundings. We simply cannot block the toxic people in our surroundings. Many of you have been asking me about how can we know or identify that the person we are dealing with is toxic. So I thought that I'm going to make a video in which I will try to share some toxic traits of toxic people. In that way, probably it will become easier for you to identify that the person you are dealing with is toxic. I've always said this, that toxicity is very contagious, just like positivity. If you are sitting with a toxic person, you will become a bitter and toxic person eventually. Trust me, when I recently blocked all these toxic people from my life, great things happened. I could feel this immense positive energy shift in my life. And I always say, when the wrong people leave, right things start to happen. So in my books, a wrong person is a person who is toxic. But before I talk about the basic traits of toxic people, I have to say this, that empaths are the biggest victims of toxic people. And there is a reason why. Empaths have this beautiful quality of being empaths. They believe in empathy. They believe in kindness. They believe in forgiveness. They always give those people benefit of doubts, those who deceive them, those who are toxic. I will say this to all my dear empaths, that don't get into the habit of collecting red flags. Toxicity is the biggest red flag. And if there is toxicity in a relationship, that relationship cannot survive. But my dear empaths, you need to understand one thing, that when empathy is practiced at the expense of your own well-being, when empathy is practiced without boundaries, that empathy is dangerous. That empathy becomes self-destructive. So let me share some basic traits of toxic people, which will help you with identifying that whether the person you're dealing with is toxic or not. And all these traits are based on my personal experiences. It is rightly said that energy never lies. As they say that when something feels off, it is off. We all are energy beings and we believe in the positive and negative energy. Here is the thing. Have you ever felt tired or drained while having a conversation with someone? Feeling good and great or empowered or motivated? You just feel tired and exhausted to a point. Toxic people's energy is very tiring, it's very draining, it's very taxing. So if you are having a conversation with someone and you're not feeling that warmth and you're thinking that, you know what, something is off, leave that place immediately. Don't sit with that person for too long, because toxic people are energy vampires. Protect your energy, protect your sanity, and walk out. Toxic people are extremely bitter, and that bitterness comes with a lack of gratitude. There is a beautiful quote which says that I've never seen a bitter person who is grateful or a grateful person who is bitter. Just like positivity and gratitude is contagious, ungratefulness and negativity is also very contagious. If you are dealing with someone who is constantly complaining and who's constantly talking about what that person doesn't have in life, you are dealing with a taxing, toxic person. So don't engage with someone who's being ungrateful. Don't engage with someone who does not count the blessings in their lives. Instead, they keep talking about what they don't have or what they have lost. Protect your sanity, protect your positivity, because gratitude is the way to live a happy and positive life. Toxic people don't have their own credibility, so they are always in search of finding credible people. Sometimes you will see that toxic people won't let you go very easily because your presence and your credibility in their life is their only definition. Toxic people are so weak that they will always try to stay in your shadow. Toxic people want you to be by their side, not as a friend. They don't see you as a friend. They see you as a credible opportunity, which they can use, abuse, or manipulate when the time comes. So beware.
If someone is trying to use your credibility, that person is toxic. Toxic people are extremely insecure and envious. They will always find their weaknesses in your strengths. They will always see their failure in your success. They might pretend that they are happy with all the achievements you have made in life, but deep inside, they are so envious that they will never be able to appreciate and celebrate your achievements in its true letter and spirit. As Maya Angelou says, when people show you their true colors, believe them the first time. So please, toxic people are extremely insecure. Do not waste your time, do not waste your energy on such people. Do not surround yourself with envious and insecure people. Walk away and never look back. Toxic people are extremely disrespectful. They will always disrespect you because disrespecting people gives them validation. They feel validated when they insult other people. These insults don't have to be too loud. Sometimes these insults come across as subtle mean comments about how you look, how you talk, how you're living your life choices, your body, your skin color. You have to understand one thing. No relationship can work if there is no mutual respect. Mutual respect is the core element to make a relationship work. So please, if you are dealing with someone who keeps on disrespecting you, who keeps on insulting you, that person is toxic and dangerous for you. Walk away. Toxic people can never be empaths. So if they're asking you a lot of questions about your personal life, about your well-being, it's never out of concern. It's always out of curiosity. Please protect your sanity, protect your weaknesses from such people, because toxic people, as they are not empaths, they will use your weaknesses against you when the time comes. Protect yourself, protect your energy. And if you're dealing with someone right now who is always curious about what you're doing in life, that person is toxic and there is no concern in their questions. Simply block them and do not overshare with a toxic person. Toxic people don't believe in the idea of self-analysis or self-growth. But it's rightly said that if you don't grow together, you grow apart. Self-growth is important. It's necessary. I mean, if you don't grow, you wither. And when you wither, eventually you rot. So in order to be a good human being, self-analysis is the key. Self-growth is important. And as toxic people don't believe in the idea of self-growth, they will never let you grow as a person. How difficult would it be to be with someone who's not willing to grow with you? Of self-growth or self-improvement, block that person because that person is extremely toxic for you. I hope this video will be of some help. You need to remind yourself one thing, that toxic people are everywhere. They can be in your immediate family, they can be in your friend circle, in your school, in your college, at your office, at your workplace. Protect your energy, protect your sanity and your well-being. Don't practice empathy at the expense of your own self-respect and your own well-being. Because, as I said earlier, if you are practicing empathy at the expense of your own well-being, it will become self-destructive. So please block all the toxicity from today, block all toxic people, and you will feel this immense shift of positive energy in your life. क्या आपने एक चीज महसूस की? बहैसियत इंसान हम बेहतर होने की बजाय कड़वे होते जा रहे हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हम नहीं जानते कि जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो लोग टॉक्सिक हैं या नहीं। हम हमेशा बात करते हैं कि टॉक्सिक लोग कौन होते हैं, टॉक्सिसिटी से हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। असर यही है कि हम वक्त के साथ कड़वे होते जा रहे हैं। लिहाजा ये बात जानना बेहद जरूरी है कि वो क्या ट्रेट्स हैं जो एक इंसान को टॉक्सिक बनाते हैं। हमें कैसे पता लगे कि जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं वो टॉक्सिक है या नहीं। लिहाजा इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक ट्रेट्स शेयर करूंगी आप सबके साथ, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो टॉक्सिक है या नहीं। इससे पहले कि मैं वो ट्रेट्स आपके साथ शेयर करूं, एक बात जानना बड़ा जरूरी है। वो लोग जो दिल के अच्छे हों, जो दिल के साफ हों, वो सबसे बड़े विक्टिम होते हैं टॉक्सिक लोगों के। इसकी एक वजह है, एक एम्पैथ, एक अच्छा दिल, एक साफ दिल रखने वाला इंसान हमेशा माफी की बात करता है, दरगुजर की बात करता है, सेकंड चांसेस देने की बात करता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बड़ी अजीम क्वालिटी है।
मगर एक बात को समझिए, अगर आप काइंडनेस और एम्पैथी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कुर्बान करके इस्तेमाल कर रहे हैं या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये आपको तकलीफ दे सकता है। लिहाजा काइंडनेस, एम्पैथी उन लोगों के साथ करने का कोई फायदा नहीं जो टॉक्सिक हैं, जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। टॉक्सिक लोगों को ब्लॉक करना बेइंतहा जरूरी है, और इस चीज का अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने खुद अपनी जिंदगी से टॉक्सिक लोगों को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। एक कमाल की किसी ने सच कहा है, एनर्जी नेवर लाइज। किसी भी इंसान की एनर्जी झूठ नहीं बोलती। कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हो, किसी महफिल में बैठे हो, और एकदम से बजाय इसके कि आप बेहतर महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें, आप थकावट महसूस करना शुरू हो जाएं, आप नेगेटिविटी महसूस करनी शुरू कर दें, टू अ पॉइंट कि आपका दिल करे कि आप उस महफिल से दूर चले जाएं, भाग जाएं। याद रखिए, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप थक रहे हैं, आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इसका यकीनन मतलब यह है कि आप एक टॉक्सिक इंसान के साथ वक्त गुजार रहे हैं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे नेगेटिव इंसान से दूर रहिए जो आपके लिए टैक्सिंग है, आपको थका रहा है। जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनको एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी को निचोड़ लेते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद नथिंग। टॉक्सिक लोग बेइंतहा कड़वे होते हैं और उनकी कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह नाशुक्री होती है। एक टॉक्सिक इंसान कभी भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करता, शुक्रगुजारी प्रैक्टिस नहीं करता। तो ये कैसे मुमकिन है कि जो शख्स शुक्रगुजार ना हो वो पॉजिटिव हो जाए, वो टॉक्सिक ना हो। मैंने हमेशा एक बात कही है कि शुक्रगुजारी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उन तमाम चीज़ों का शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास हैं, उनका भी शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास नहीं है, और उनका भी शुक्र अदा कीजिए जो कभी आपके पास थी और अल्लाह ने आपसे वापस ले ली, क्योंकि शायद वो आपके लिए ठीक नहीं थी। एक टॉक्सिक इंसान ये बातें नहीं सोचता, वो हमेशा नाशुक्री करता है, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं शुक्रगुजार रहना, आप चाहते हैं पॉजिटिव रहना, और आप चाहते हैं कि आपके अंदर कड़वाहट ना आए, कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि एक नाशुक्रा इंसान, एक कड़वा इंसान बेसिकली एक टॉक्सिक इंसान है। एक टॉक्सिक इंसान की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। लिहाजा वो हर वक्त इस खोज में रहता है कि कोई ऐसा शख्स उसको मिल जाए जिसकी क्रेडिबिलिटी को इस्तेमाल करके वो दुनिया में अपना नाम बना सके। याद रखिए, एक ऐसा टॉक्सिक शख्स जो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कभी आपको एक दोस्त की नजर से नहीं देखेगा, वो आपको देखेगा एज अ क्रेडिबल अपॉर्चुनिटी जिसको वक्त आने पर वो इस्तेमाल भी करे और अब्यूज भी करे। लिहाजा टॉक्सिक लोग बेइंतहा इनसिक्योर होते हैं और बहुत एनवियस। उनका दिल हसद से भरा होता है। ये हो ही नहीं सकता कि एक टॉक्सिक इंसान कभी भी आपकी खुशी में खुश हो। ये हो ही नहीं सकता कि एक शख्स जो इतना एनवियस हो, जिस पे इतना हसद हो, जो टॉक्सिक हो, वो आपकी कामयाबी में अपनी नाकामी ना देखे। ऐसे लोग शायद कभी ना कभी प्रिटेंड तो करें कि वो आपकी खुशी में खुश हैं, मगर अंदर ही अंदर वो हसद की आग में जल रहे होते हैं, और वक्त आने पर यह हसद बाहर आ जाता है। अल्लाह आपको दिखा देता है कि कौन आपके साथ वाकई मुखलिस है और कौन नहीं। माया एंजेलो बड़ी खूबसूरत बात कहती हैं कि जब लोग आपको अपने ट्रू कलर्स, अपने हकीकी रंग दिखाएं तो यकीन कर लिया करो। लिहाजा अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आपको ये लगता है कि आप जब भी अपनी कोई खुशी उनके साथ शेयर करते हैं उनका मुंह बन जाता है, या वो कुछ कहते नहीं, या वो खामोश हो जाते हैं, समझ जाइए वो लोग एनवियस हैं, वो लोग आपसे हसद करते हैं। और जब तक आप अपने आप को हासिदों से नहीं बचाएंगे आप कामयाब नहीं हो सकते। एक हासिद सबसे ज्यादा टॉक्सिक इंसान होता है। लिहाजा ऐसे हासिद से, ऐसे टॉक्सिक इंसान से दूर रहिए, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दीजिए फॉर योर ओन सैनिटी। टॉक्सिक लोग बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। दे डोंट बिलीव इन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वो हर छोटी बात पर तजलील करते हैं दूसरों की, क्योंकि दूसरों की तजलील करके दे फील वैलिडेटेड, उन्हें खुशी महसूस होती है, क्योंकि उनके अपने अंदर कोई काबिलियत नहीं होती। अब ये इंसल्ट्स क्या होती हैं, ये तजलील किस तरह की जाती है? कुछ सटल इंसल्ट्स होती हैं जिनको शायद हम हंसी मजाक में उड़ा दें। किसी का आपके चेहरे के बारे में कमेंट करना, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे उठते बैठते हैं, आपने अपनी जिंदगी में जो चॉइसेस इख्तियार की हैं उनके बारे में इंसल्ट करना। ये इंसल्ट्स बहुत बड़ी नहीं होती, बाज दफा ये इंसल्ट्स बहुत सटल होती हैं जिनको हम हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे
आपकी जिसामत पर कमेंट करना, आप कैसे दिखते हैं उसके बारे में कमेंट करना, आप अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं उस पर कमेंट करना। ये वो तमाम डिसरिस्पेक्ट्स हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं मोहब्बत के नाम पर, दोस्ती के नाम पर। मगर याद रखिए, कोई भी रिश्ता अगर उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट शामिल नहीं, वो रिश्ता देर पा नहीं होता। अगर कोई शख्स ऐसा है जो भले हंसी मजाक में ही आपकी तजलील कर रहा है, वो शख्स टॉक्सिक है। एक टॉक्सिक इंसान कभी भी एक एम्पैथ नहीं हो सकता। एक ऐसा शख्स जो अंदर से इनसिक्योर है, जिसके अंदर हसद है, जिसके अंदर कीना है, वो भला कैसे एक काइंड इंसान बन सकता है? एक टॉक्सिक इंसान हमेशा आपसे 10,000 सवाल पूछेगा ताकि आपकी कोई ना कोई वीकनेस उसके हाथ आ जाए, जिसको वो वक्त आने पर एक्सप्लॉइट कर सके, आपकी जिंदगी को मुश्किल बना सके। एक टॉक्सिक इंसान आउट ऑफ कंसर्न नहीं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे सवाल पूछता है। कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ ना बताइए। मैं हमेशा कहती हूं कि अंडर शेयरिंग इज बेटर देन ओवर शेयरिंग। कम बात कीजिए और कोशिश कीजिए आपकी कोई भी वीकनेस किसी भी टॉक्सिक इंसान के हाथ ना आए, क्योंकि वक्त आने पर एक टॉक्सिक इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एक टॉक्सिक इंसान सेल्फ ग्रोथ पर यकीन नहीं रखता। एक टॉक्सिक इंसान सेल्फ एनालिसिस पर यकीन नहीं रखता। हम सब कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला है, और जब तक हम इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि हमने कोई गलती की है, हम बेहतर नहीं हो सकते। एक टॉक्सिक इंसान कहता है आई नो इट ऑल, मैं सब जानता हूं या मैं सब जानती हूं और मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। याद रखिए, जो शख्स सेल्फ ग्रोथ पर यकीन नहीं रखता वो शख्स टॉक्सिक है। सेल्फ ग्रोथ हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम अगर बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें अपनी बुराइयों को खुद तलाश करना होगा, अपनी मिस्टेक्स से हमें खुद सीखना होगा। और एक ऐसा शख्स जो आपके साथ ग्रो करने के लिए तैयार नहीं, आपके साथ रिश्ता कैसे निभाएगा? आई होप कि इस वीडियो में जितने भी ट्रेट्स टॉक्सिक लोगों के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, दे विल बी ऑफ सम हेल्प। याद रखिए, टॉक्सिक लोग हर जगह मौजूद हैं, घरों में भी मौजूद हैं, आपके ऑफिस में मौजूद हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं, दोस्तों में मौजूद हैं। आपने अपनी सैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बात पर जोर देना है कि जो भी इंसान आपके अराउंड है और टॉक्सिक है, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। याद रखिए, जिस तरह पॉजिटिविटी कंटेजियस होती है, नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी भी कंटेजियस होती है। अगर आप चाहते हैं शुक्रगुजार रहना, अगर आप चाहते हैं कि आपके लहजे में, आपकी बातों में, आपके ऑरा में कड़वाहट ना आए, अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर रखिए।